Hello everyone, welcome back. In this lecture about the HTML forms capturing user input. So we will explore HTML forms, a crucial tool for collecting user input on your website. By the end of this lecture, you will be able to create functional and user-friendly form. So firstly, I am explaining the form. So let's start by understanding the basic structure of form and how to use attribute like action method to define their behavior. Action and method. So introduction to form. Forms are essential for interacting websites. Forms are essential for interacting websites, allowing user to provide input, register or contact you. So HTML form is a section of a web page that allow user to input data and which is then sent to a server for processing. HTML stands for a hypertext markup language. And second question is how do users interact with HTML form? This is a very important, the basic question. So users fill out the form by entering text, selecting option or uploading file. I think this is clearing now. So HTML form element. This is your syntax, the form action, and the main point here, interacting website, allowing user to provide input and the register contact you. So form element. This is your syntax. Form open here and a close here. Action क्या है हमारा submit, method क्या post. And post क्या होता है? Like I told you before in the previous videos, you can see, and the here I am telling you again. And this lecture, what is the meaning of the get and the post? This is your comment. Form elements go here. Okay. So क्या है ये actually? पहले मैं आपको definition बताती हूँ, then I will explain about this more. So HTML form element are component of an HTML form that allow a user to input data. They include text, fields, checkboxes, radius button, and submit button. So here, this is your HTML form. This is your HTML form. You can see this is your HTML form, and this is your first name Reshmi and the last name Sharma, and then submit the form here by clicking this button submit. So this is basic HTML form. You can see here my cursor. This is your basic HTML form. Okay. So here next attribute. Attribute, first attribute क्या है हमारा? Action, math. Attributes क्या actually? Action, method, and the target. Action means you like that specify where to send from the data. This is very important thing. You can see on my screen clearly. Specifies where here. Observe my cursor. Specify where to send from data, form data. तो action क्या होता है? Action, in another words, action attribute defines the action to be performed when the form is submitted. Usually क्या होता है? Usually the form data is sent to a file. This is very basic. Form data is sent to a file on the server. When the user click on submit, here you can see there is a submit button. There is a submit button. Okay, there is a submit button. So आगे क्या आता है हमारा? When the user click on the submit button, in the example, uh, in the above example here,
form. The form data is sent to a file called action underscore page.php. तो PHP क्या है अभी? PHP is your all about the server. So PHP stands for a hypertext preprocessor. What hypertext preprocessor? It is a scripting language used to develop websites and web applications. PHP was originally an abbreviation for personal homepage. What? For personal homepage. It was created by a Danish-Canadian programmer, Rasmus Lerdorf in 1993. In 1990 and released in 1995. क्रिएट हो गई थी 1993 में एंड द रिलीज हो गई थी 1995 में. PHP is a server-side scripting language that's encoded with the HTML. It is used to develop dynamic and static websites. PHP is general purpose scripting language. So this is your PHP. Come back on topic method. Next attribute is method. Method is to define how to send data. How to send data, get or post. So here in another words, method is specify how to send from data. How to send from data. The form data is sent to the page specified in the action attribute. The form data can be sent as a URL variable with the method of get. This is your get method. And for HTTP post transaction with method of post. जैसे कि URL था हमारा get से and the HTTP था हमारा post से. Notes on the get appends form data into URL in the name value pair. तो अभी गेट क्या होता है? गेट एक्चुअली है क्या, जिसमें जहाँ पे मेथड में हम यूज कर रहे हैं गेट और पोस्ट का, गेट है क्या? गेट एक्चुअली इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम द स्पेसिफाइड रिसोर्स. गेट क्या होता है फिर से बताती हूँ मैं आपको. गेट इज यूज्ड टू रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम a specified resource. It's very basic. Note that the query string name value pair, like I told you before in the definition of the method, is sent in the URL of a GET request. I think it's clearing now. So post, what's the meaning of the post? Post is used to send data to a server. ये क्या करता है? Send data to a server to create या फिर update a resource. The data sent to a server with post is stored in a request body of what? HTTP request. HTTP request. Okay, so HTTP क्या है अभी? मैंने आपको पहले sorry. A full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol होता है HTTP. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol is an application protocol used for data communication. It's based on the data communication in the World Wide Web, and it provides a standard for a web browser that facilitates user to exchange info means your information over the internet. ये तो हो गया हमारा HTTP. HTTPS क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है इसके? Hypertext Transfer Protocol Secure. I think it is also clearing now. अब क्या है कि एक्चुअली HTTP को यूज क्या है, किस चीज के लिए? What is the HTTP used for? So HTTP is a primary protocol. What? HTTP is a primary protocol for transmission of information across the internet. Information is exchanged between the clients and the server in the form of hypertext document from which HTTP get its name. इसलिए इसका name आया HTTP. Okay. So
next attribute is target. Target specifies is your target where to display the response. Example क्या है? Underscore blank. In the another words, target attribute specifies a name or keyword that indicate where to display the uh, response that is received after the submitting the form. And the target defines a name of or keyword for a browsing context. Example क्या हो सकता है? Guess it now. Tab, window or inline frame. Tab, window or inline frame. And you can use the target is equal to this here. You can see underscore blank attribute if you want. If you want your user to click on a link, if you want, listen carefully, if you want your user to click on link that opens up a new browser tab. जब हम क्लिक करेंगे किसी भी लिंक पे तो वो नए ब्राउजर टैब में ओपन होगा. The target blank attribute, blank is representation here, underscore blank. The target is equal to underscore blank attribute is used to inside the opening anchor tag. Okay. So form element. Form element अब क्या है? So form element is a container for different type of input element such as text field, checkboxes, radio button, submit button, etc. All the different forms, elements are covered in this chapter HTML form elements. So first element is input field. Input field क्या होता है अब? Input field are an essential user here. So input field are an essential user interface design element providing users with the means to enter non-standardized response. They are used in many different situations, but the most people will have come across them when entering personal details and delivery addresses on e-commerce platforms or sending online queries. Okay. So here syntax you can see syntax input open here. Type क्या text placeholder enter your name. Input again email placeholder enter your email same as for the password placeholder enter your password. अब क्या placeholder क्या होता है? Suppose this is your HTML form, your first name, last name, and the submit button is given in the HTML form. So here enter your first name. So this enter your first name is your placeholder. Then आप इसके ऊपर लिखोगे तो हमारा फॉर्म दिखेगा ऐसे रेशमी. तो ये एंटर योर फर्स्ट नेम ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एंड योर नेम इज suppose your रेशमी. So this is your placeholder. Enter your first name. जो आपको बताया गया एक्चुअली यहाँ पे लिखना क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स आएंगे. So last name same as for the last name. Enter your last name is your placeholder. Then you can write here your last name and the first name also. Then the submit the form by clicking on the submit button. So next क्या है हमारा text area. Text area element is often used in a form to collect user input like comments or reviews. A text area hold an unlimited number of characters and the text renders in a fixed width font.
usually courier, and the size of a text area is specified by the column and the rows attribute or the CSS property. So syntax क्या है हमारा टेक्स्ट एरिया ओपन या प्लेस होल्डर योर मैसेज देन क्लोज इट हियर. एक्चुअली क्या है हमारा जैसे कि हम किसी किसी फॉर्म में देखते हैं हम ऐसे लिखा होता है राइट अबाउट योर सेल्फ मतलब अपने बारे में कुछ लिखना है तो वो हमारा टेक्स्ट एरिया होगा योर मैसेज या फिर लाइक लिखा हो सकता है कि आपका उसके किसी के भी रिगार्डिंग में मैसेज हो तो योर मैसेज करके लिखा होगा बॉक्स बना होगा देन यू कैन राइट इन द बॉक्स योर मैसेज. So here next is a button HTML button form attribute is used to specify the one or more forms that the button element belong to, and the syntax is your button type is submit and the submit and the button this is your submit button and you can see also in the HTML form this is your submit button. So and the this is syntax attribute value के the form ID. It contains value form ID which specify the one or more than button elements belong to. And you can create a simple button by this syntax here. And fourth one is a fourth, right? Yeah, fourth. Fourth one is a label. Label HTML element represent a caption or title for an item in a user interface. And the label is used to create a caption for a form control like I told you before. And the label can be associated with the form control either implicitly by the placing the control element inside the label element or explicitly by the using for the attribute. So this is your syntax for the labels. Label for a name and the name and the close it here. And the input type is text, ID is name. So now अब क्या होता है फॉर्म वैलिडेशन आता है हमारा टॉपिक क्या है इसमें HTML फॉर्म में फॉर्म वैलिडेशन. Performing form validation for a required field in HTML ensures that a user must fill in specific fields before submitting a form. This is typically done using the required attribute. This is your required attribute, and you can say field also, and which prevent form submission if the field is left blank, ensuring proper data input. Okay. अब क्या होता है रिक्वायर्ड फील्ड का सिंटेक्स ये है रिक्वायर्ड फील्ड मैंने आपको बता दिया एक्चुअली होता क्या ही है ना और ये इसका है सिंटेक्स इनपुट टाइप टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंड द पैटर्न अब आता है पैटर्न में हमारा पैटर्न क्या होता है तो पैटर्न एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट आउट ऑफ द टेक्स्ट email URL password and the search input types. The pattern attribute which the specified is a regular expression which the input's value must match for the value to pass constraint validation. And so first question is arise in our mind. What is the required pattern for email validation? Good. One or more characters that can be letters lowercase a to z and the uppercase capital A to capital Z and the digit 0 to 9 underscore dots plus sign and the hyphens. That symbol which is required in
all valid email address, one or more character that can be letters, digits or hyphens. Input type text, this is your pattern, and title only letters allowed. So here theory part is completed. So now we will create a registration form step by step, adding fields for a name, email and the password along the basic validation. So open your VS Code with me. This is my VS Code. So create the another file, tenth code dot html. Okay, close it here. Shift plus में shift and the exclamation mark. Then press the enter. This is a boilerplate for HTML. And here I'm writing the title, user registration. ओके यूजर रजिस्ट्रेशन हो गया. अब क्या लिखना चाहिए हमें हमें पहले एक H1 हेडिंग बनानी है. So firstly I make the HTML heading H1 tag here, register. हाँ स्पेलिंग गलत है. रजिस्टर सही है. सही है. Okay. हाँ. Then form action क्या है इसमें फॉरवर्ड स्लैश then write submit then method is post then label for किसके लिए है ये नेम के लिए नेम ओके सॉरी देन इनपुट. अब इसमें हम प्लेस होल्डर वाली चीज लिखेंगे. टेक्स्ट क्या है हमारा टेक्स्ट टाइप को हम टेक्स्ट ही रखते हैं. देन आईडी क्या रखेंगे हम आईडी क्या है हमारी नेम. ठीक है ना. आईडी हमारी नेम है. अब नेम के लिए भी तो हमारा एक्चुअली नेम ही हो. वेरी सिंपल थिंग. हाँ नेम देन प्लेस होल्डर enter your name. Enter your name. Then required. Then write BR simple. Okay, done. फर्स्ट हमारा बन गया. देन रेंट यहाँ लिखेंगे. Then you can here copy paste of it. So I'm copy here. Okay. कि अब हम 10th कोड पे आ गए हैं तो we can do this thing. कि कोडिंग के साथ साथ हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी
करना पड़ेगा। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट विद स्मार्ट वर्क। सो हियर कंट्रोल भी पेस्ट हो गया। अब हमें चेंज करना है, हमें किसके लिए बनाना है, हमें ईमेल के लिए बनाते हैं हम पहले। ईमेल हो गया। अब यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये होता है कॉपी पेस्ट में चेंजिंग कहीं कैन डू दिस थिंग। ईमेल। अब टेक्स्ट टाइप में क्या लिखना है, ईमेल लिखेंगे। ओके। आईडी भी क्या है हमारी, we can copy here then paste here। done। एंड द ईमेल में ईमेल आएगा भाई, अब नहीं नेम में तो ईमेल ही है हमारा ये। कंट्रोल वी, एंटर योर ईमेल। डन। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। सिर्फ फॉर्म डॉक्यूमेंट अभी हम कर लेंगे। पहले हम अपना कोड लिख लेते हैं, देन डू अगेन कॉपी, देन कंट्रोल वी। तो अब हम किसके लिए बनाएंगे, बनाते हैं भाई पासवर्ड के लिए। पासवर्ड ओके हो गया भाई। अगेन कॉपी हियर, ये स्मॉल होते हैं। हाँ कंट्रोल भी, और पी को हम कैपिटल कर लेते जो कि हमारे दिखाई देगा हमारी स्क्रीन पे। पासवर्ड हो गया भाई। अब इनपुट में जो टाइप है वो तो हमारा पासवर्ड ही आएगा, बिकॉज ये तो हमारे पासवर्ड के लिए ही है। और आईडी में हमारा क्या आएगा भाई बताओ, वो भी पासवर्ड ही आएगा। एंड द नेम में भी पासवर्ड आएगा। एंटर योर पासवर्ड। डन। ओके हो गया पासवर्ड के लिए तो सेम। अगेन कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब हमें मैसेज के लिए भी बनाते हैं हम, है ना, कि हमने अभी पढ़ा था ना मैसेज वाला, से बोलते हैं हार्ड वर्क प्लस में स्मार्ट वर्क। ये बिगनर्स के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या मैनुअली करना चाहिए, बट हमने तो इतनी सारे कोड लिख लिए हैं। देखो हम अभी 10th कोड पे हैं, इसलिए हमने किया, है ना। स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए हार्ड वर्क के साथ साथ। सो ये मैसेज हो गया हमारा भाई, और टेक्स्ट मैसेज हो गया। अब मैसेज में क्या होता है एक्चुअली, हाँ नहीं ऐसे एक चीज नहीं बता पाऊंगी मैं आपको फिर। हम मैनुअली लिखते हैं, देखा ये था हमारा स्मार्ट वर्क किया ना हमने, अब हम करेंगे हार्ड वर्क। लेबल, लेबल फॉर किसके लिए, ये मैसेज के लिए ये, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या लिखवाना चाहेंगे, मैसेज लिखवाना चाहेंगे भाई, क्या हमारे यूजर का मैसेज है, ठीक है। देन लेबल, अब बी आर तो लिख देना। देन टेक्स्ट एरिया, नेम, नेम क्या है मैसेज, आईडी भी मैसेज ही है भाई, आईडी भी मैसेज भी है। सजेशंस आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है कि एक्चुअली में करना क्या है। प्लेस होल्डर में क्या आएगा भाई, योर मैसेज है, या फिर राइट योर मैसेज, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लिख रही हूँ, द टेक्स्ट एरिया, देन राइट बी आर, again br, then creating the button,
बटन भाई अब तुम बताओ क्या लेना चाहिए हमें। रजिस्टर लिखते हैं, सबमिट भी लिख सकते हैं, बट मैं रजिस्टर लिखना चाहूंगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हियर राइट द टाइप। टाइप में क्या लिखेंगे भाई, सबमिट ही करना है अब हमें तो। हो गया ना पूरा। हाँ वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ्ट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। हो रहा है, हो गया ना बढ़िया। हम्म, हमें शो प्रीव्यू पे करना है। राइट साइड है वो हमारे वीएस कोड के। वाओ अमेजिंग। पर मैं आपको यहीं से यही बता देती हूँ। दिस इज योर टाइटल यूजर, ये रहा हमारी स्क्रीन पे, ये रहा यूजर रजिस्ट्रेशन। एंड दिस इज योर H1 हेडिंग रजिस्टर। और ये हमारा है नेम। एक्शन क्या है हमारे किसी में सबमिट के लिए, सबमिट के हम फॉर्म बना रहे हैं तो ये इनपुट क्या हमारा नेम वाला है। एंटर योर नेम प्लेस होल्डर। प्लीज देखो, हाँ हाँ, दिस इज योर प्लेस होल्डर, एंटर योर नेम एंड यू कैन सी हियर थोड़ा सा लाइट 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 कलर में लिखा हुआ है एंटर योर नेम। हम लिखेंगे भी अभी, फर्स्टली मैं आपको बता दूं एक्चुअली है क्या ये। सेम एज फॉर द ईमेल, सेम एज फॉर द पासवर्ड, द टेक्स्ट एरिया में हमारा मैसेज आएगा, हम यहाँ पे मैसेज भी लिखेंगे अभी। एंड द टाइप यहाँ पे हम कर देंगे फॉर्म सबमिट। सो हम देखते हैं इसे पूरा करके। ओपन इन द ब्राउजर। हो गया हाँ। नाउ यू कैन ऑल्सो सी। तो हम अपना नाम लिखते हैं, रिया। माय नेम इज रिया। यस। नहीं हम लिखते हैं किसी का भी नाम लिख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रेशमी लिया था हम एग्जाम्पल ना उसमें थ्योरी में, तो हम रेशमी लिखते हैं, रेशमी। अब हमें इनकी ईमेल बनानी पड़ेगी, रेशमी और रेशमी शर्मा था, रेशमी एस @ gmail.com। हो गया। पासवर्ड क्या है, 12345678 9। एंटर मैसेज। वी आर लर्निंग अबाउट, क्या है हमारा आज का टॉपिक भाई, HTML फॉर्म। HTML फॉर्म टुडे आज का टॉपिक नहीं था हमारा, है ना भाई। ये हमारा मैसेज हो गया। देन रजिस्टर। फाइल नॉट फाउंड बिकॉज हमने बैकएंड प्रोसेस नहीं किया है अभी। ब्रैकेट हियर है। अब एक चीज बताती हूँ मैं आपको, अगर मैं ये नहीं लिखती हूँ, देन देखो प्लीज फिल आउट दिस रजिस, प्लीज फिल आउट दिस। अगर यहाँ पे कुछ भी लिख, सपोज कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो अब क्या आता है। @ होना चाहिए इसमें, ये इस जो ही हमने लिखा है उसमें @ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिख दूं, तो इंटीजर लिख दूं, देखो पहले मैं इसको सही करती हूँ, देन देखते हैं। डेरी ईमेल रेशमी की, देन ओ सॉरी पासवर्ड भी नहीं किया हमने अभी तक। पासवर्ड लिख दिया, रजिस्टर। बट यहाँ पे लिखना है क्योंकि वहां लिखा हुआ था प्लेस होल्डर, इसलिए ही होता है कि एक्चुअली देखो प्लेस होल्डर होता है इसलिए कि हमें यहाँ पे नाम लिखना है, कुछ गलत चीजें नहीं लिखने से, इंटीजर वैल्यू वगैरह नहीं लिखनी है यहाँ पे, इसलिए प्लेस होल्डर दिया होता है। ओके, सो टुडेज आवर लेक्चर हम अब करते हैं फिनिश। एंड कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी कर सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, include field username and the password. Second is a design feedback form,
Add a field for a name, email, and a feedback text. Experiment with the validation. Add a validation rules for a required field and specify formats. Example email. So, amazing, great job today. You have learned how to create a forms for a capturing user input. In the next lecture, we will explore how to enhance form with advanced input type features. So see you to the next lecture. Thank you.